Good morning, students. In this lecture, we discuss measures of skewness. The term skewness means lack of symmetry in a frequency distribution, and measures of skewness helps us to find out the direction and extent of asymmetry in a series. They may either be absolute or relative. The measures which express skewness in the units in which the value of the series are expressed are called absolute measures of skewness, and the measure which express skewness in the form of ratio or percentage are called relative measure of skewness. Relative measure of skewness, also called coefficient of skewness. The important methods of measuring skewness are Carl Pearson's method, Bowley's method, Calais method, and last is method of moments. In this lecture, we discuss Carl Pearson's method. Carl Pearson's method is based on arithmetic mean, mode, and median, and standard deviation. Carl Pearson has given the formula for measuring skewness: absolute measures of skewness, and one is coefficient, जिसनों relative measure of skewness भी किया जाता है. Skewness is equal to mean minus mode, and coefficient of skewness mean minus mode divided by standard deviation. When mode, that is Z, is not defined, then skewness is equal to 3 mean minus median. Then ये formula से use करते हैं. When mode Z is not defined, then coefficient of skewness 3 mean minus median divided by mode. The value of Carl Pearson's coefficient of skewness usually lies between +1 and -1. And in case mode is ill-defined, the value of coefficient of skewness lies between +-3. That means +3 to -3 the values the which lies कर दिया. First example of discrete series. Heights given are, student see, that is x 58, 59, 60, 61, 62, 63. Frequency 10, 18, 30, 42, 35, 28. स्क्यूनेस ਨੂੰ फाइंड आउट करने ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਨੂੰ फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੋਡ ਨੂੰ फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਕੂਨੈਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ फाइंड आउट ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਦੈਨ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨੈਸ ਨੂੰ फाइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
अगर सानू मोड नहीं फाइंड आउट कर सकते दैन असी मीडियन नू फाइंड आउट करके स्क्यूनेस नू फाइंड आउट कर सकते हैं। अज्यूम्ड मीन लै रही हैं दैट इज़ 60 क्योंकि मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ टी एक्स ओवर एन। शॉर्टकट मैथड ना कर रही हैं मीन नू फाइंड आउट करने के लिए। dx is equal to x minus assumed mean and assumed mean is 60 minus 2 minus 1 0 1 2 and 3 f dx dx ਨੂੰ f ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -20 -18 0 42 70 84 क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीएशन के विच असीं dx का स्केयर करके f के नाल मल्टीप्लाई करते होंगे 4 1 0 1 4 9 इसलिए f d x स्केयर 40 4 मल्टीप्लाई टाइम 18 0 42 140 and 252. So summation f dx is equal to 158. Summation f dx square is equal to 492. और मीन के फॉर्मूले में असीं वैल्यूज़ नूं पुट करेंगे मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन इज 60 प्लस समेशन एफ डी एक्स इज 158 डिवाइडेड बाय एन इज 163 is equal to 60 plus 0.969 that is 60.69. Now standard deviation the formula is equal to summation f dx square over n minus summation f dx over n the whole square. वैल्यूज़ नू पुट करांगे फॉर्मूले 492 डिवाइडेड बाय 163 माइनस 158 डिवाइडेड बाय 163 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3.492 ਨੂੰ 160 ਨਾਲ डिवाइड किया 3.0184 माइनस 0.9395 is equal to 2.0789 is equal to 1.4418. So by inspection method mode is 61 that is mode 61 as its क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जी की है सब तो हाईएस्ट है एज इट्स फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। Thus mean is equal to 60.969, standard deviation is equal to 1.4418 and mode is equal to 61. So therefore coefficient of skewness mean minus mode divided by standard deviation that is 60.969 minus 61 divided by 1.4418 is equal to minus 0.031 over 1.4418 is equal to minus 0.0215.
Next example is in continuous series. Variables given are, that is x 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. Frequency 2, 5, 7, 13, 21, 16, 8 and 3. N is equal to 75. Next ऐसे फाइंड आउट करेंगे मिड वैल्यू, दैट इज m 0 to 5 की मिड वैल्यू आएगी 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5. नेक्स्ट ਅਸੀਂ फाइंड आउट करेंगे dx, दैट इज मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड वैल्यू. इतने मीनू फाइंड आउट कर ली मैं स्टैप डेविएशन मैथड यूज़ कर रहा है. समेशन एफ टी डैश एक्स ओवर एन मल्टीप्लाई आई अज्यूम्ड मीन प्लस डी एक्स इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10 and 15. d dash x is equal to dx divided by I. I थे कॉमन डिफरेंस कितना है मिड वैल्यू के विच, दैट इज़ 5 का डिफरेंस है क्लास इंटरवल से. दैट इज़ dx डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. d dash x square 16, 9, 9, 4, 1, 0, 1, 4 and 9. d dash x ਨੂੰ f ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. f d dash x 4 multiply 2 -8 -15 -14 -13 0 16 16 9. f d dash x स्क्वायर, d dash x के हम f ना मल्टीप्लाई करेंगे 32 45 28 13 0 16 32 27. सो समीशन एफ टी डैश एक्स की वैल्यू आएगी -9. समीशन एफ टी डैश एक्स की वैल्यू इज़ 193. वैल्यूज़ में इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. अज्यूम्ड मीन इज़ 22.5 प्लस -9, n is 75 multiply I is 5 is equal to 22.5 minus -9 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, -45 ਨੂੰ 75 ਨਾਲ डिवाइड करके वैल्यू आएगी -0.6 is equal to 21.9. that is mean value. So standard deviation is equal to summation f t dash x square over n minus summation f t dash x over n the whole square multiply I. Summation f t dash x square the value, that is 193 divided by 75 minus -9 over 75 the whole square multiply 5. It is 2.5733
minus 0.0144 multiply 5 2.5589 multiply 5 is equal to अंडर रूट में सॉल्व किया वैल्यू आएगी 1.599 multiply 5 is equal to 7.995 for now by inspection method mode class is 20 to 25 because highest frequency area that is 21 इसलिए उसकी सामने जी क्लास इंटरवल केड़ा लवेंगे असी 20 to 25 में कंटिन्यूस सीरीज विच मोड में फाइंड आउट करने का मैथड होंगे सेट इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू L1 प्लस D1 plus D2 multiply I where D1 is equal to F1 minus F0 modulus D2 is equal to F1 minus F2 जी क्लास इंटरवल ली है बाय इंस्पैक्शन मैथड दैट इज़ 20 to 25 उसके सामने जी वैल्यू है दैट इज़ 21 उसनों हम अज्यूम करांगे F1 उस तो उपर वाली वैल्यू नू F2 उस तो नीचे वाली वैल्यू सॉरी F0 इसनों F2 हुण D1 इज इक्वल टू F1 वैल्यू कितनी साडे को 21 माइनस 13 इज इक्वल टू 8 F1 इज 21 F2 इज 16 वैल्यू इज 5 हुण इस वैल्यूज़ नूं असीं फॉर्मूले विच पुट करांगे L1 दैट इज़ लोअर क्लास वैल्यू की है 20 प्लस D1 इज 8 D1 8 plus D2 5 multiply I class interval